Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. Today I am here to discuss important current affairs which appeared in past 3 days, and these current affairs are taken from the Hindu editorials and the Indian Express, which are considered to be important newspapers for preparing for UPSC Civil Services examination. So the current affairs that is being covered at Apti Plus are very comprehensive, and we cover the current affairs from the diverse perspective, so that all the syllabus of UPSC is catered to. So for this reason, the current affairs is very important, and especially the daily news and editorial analysis. And the first topic of analysis for today is the roadblocks in Indian Railways. ठीक है, so Indian Railways related news है, and Indian Railways is an important part of the economy of India, and for this reason this topic is important, and this Indian Railways, this is related to the economy, right? And the syllabus that it caters to is the GS paper 3, and we have seen that recently the Indian Railways has been facing the various challenges, such as the train accidents, ठीक है, high reliance on the freight traffic, right? And there is less amount of revenue that is being generated from the Indian Railways, etc. So for these reasons, the Indian Railways have been facing various challenges. So in this analysis, the Indian Railway, the challenges that is being faced by Indian Railways and various other aspects are related to Indian Railways will be covered. So for this reason, watch this video till the end. So the Indian Railways, the context is that the Indian Railways is the world's largest, ठीक है, world's 4th largest network. This is the world's 4th largest network, but despite that, there are significant challenges that Indian Railways is facing, such as we talked about the freight transport, right? So the freight transport, if you see the freight transport data, ठीक है, there has been decline from the freight transport from the 1951. ठीक है, it was 85% in 1951 to the 30% only in 2022, right? So this is the data you can see. 85% it was in 1951, it was 85%, but today it is 30% only in 2022, right? So freight, that means the transport of goods and commodities. So the transportation, the means of transportation, such as the passenger transport, there are two type of rails in India, right? First one is the transport for the passengers, right? Passenger train, and the second one is the freight train. And most of the goods, most of the revenue of the Indian Railways comes from the freight transport, ठीक है? तो जो गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांसपोर्ट के थ्रू जितने जो रेवेन्यू आता है इंडियन रेलवे से, वो काफ़ी ज़्यादा है व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड विद द पैसेंजर रेल, ठीक है? तो the share of the freight was very high, but this is nowadays is declining, and this has declined from 85 to 30%, and this decline poses serious challenge to India's net zero emissions, ठीक है? तो ये environment से related topic भी है, right? So GS paper 3 में environment related topic भी है, and since India is trying to achieve a net zero emission target by 2070, ठीक है? तो इंडिया का टारगेट है कि 2070 तक net zero emission होगा, right? Net zero emission, that means there will be net zero emissions, that is the carbon dioxide that is emitted in the air would be neglected, would be nullified by the amount of carbon dioxide that is absorbed, ठीक है? तो there will be net zero emission by 2070, that is the target of India, but that is again challenged by Indian Railways, ठीक है? So Indian Railways में जो electrification का target हो रहा है, right? There will be the Indian Railways is considered to be the area where there is less emission, ठीक है? तो road transport में जितने emission होता है, right, from trucks and the vehicles, etc., that emission from railways is very low, ठीक है? तो इसीलिए रेल ट्रांसपोर्ट इज कंसिडर्ड टू बी मोर environmental friendly than the road transport, but this situation is changing now, and this is again a challenge. And national rail plan, so this is an important plan, ठीक है? So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल रेल प्लान बनाया है, जिसके तहत
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू रिवर्स दिस ट्रेंड बाय टारगेटिंग 45% रेल शेयर, ठीक है। तो 45% रेल शेयर इन फ्रेट ट्रांसपोर्ट बाय 2033, ठीक है। तो जो फ्रेट का जो ये है शेयर है, ठीक है, इन द फ्रेट ट्रांसपोर्ट इन द रेलवेज, इट इज एम टू बी इंक्रीज टू 45% अगेन, ठीक है। सो अभी जो 30% है, इट इज एम टू बी इंक्रीज टू 45% as per the rail plans, right? And this target is again difficult to be met, ठीक है, if the current trends goes on. So this is again a challenge. So these are the context, right? So we'll discuss in detail about all these facts. The growth rates of passenger and freight train movement have slowed, ठीक है। दोनों का जो growth rate है, not only in the freight segment but also in the passenger segment there is growth decline, right? And the 12 5-year plan जो पीरियड था 2012-13 से 2017 तक, ठीक है, तो ये पीरियड में there was a decline in both the revenue from the freight and the passenger train, ठीक है। So now let us delve into detail about the details, ठीक है, details of this news. So if you see the components, different components such as the road, railways, ठीक है, waterways, airways, etc., right? So if we see the different components of the transport of the freight, ठीक है, जहाँ से फ्रेट ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फ्रेट ट्रांसपोर्ट का कंपोजिशन है, दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय रोड, ठीक है। सो इंडिया में सबसे ज़्यादा गुड्स का ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है? रोड से होता है, ठीक है। एंड दिस इज 60%. सो दीज फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड इंटरव्यू के लिए भी ये सब डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। एंड इम्पॉर्टेंटली फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, you might be asked these data and facts directly, right? And in the mains you can draw chart like this and you can write your answers, ठीक है। presentation is very important in UPSC mains answer writing. So for this reason these data facts are important and how they are presented are important. तो road का जो contribution है which is 60.2% and the rail का contribution कितना है? 32%, ठीक है। and the waterways का contribution कितना है? 7.6% and the airways का contribution is less, ठीक है, it is very less compared to others. So the freight का contribution जो अगर आप इस चार्ट से देख रहे हो, तो रोड का जो रोड is considered to be mostly polluted sector than the rail sector, rail, airways, waterways, etc., ठीक है। तो इसका contribution ज़्यादा है, that means the emission is more here, right? And in the rail and waterways, which is considered to be environmentally friendly because the emission from the rail and waterways is less, but इसका जो contribution है freight transport में, that is low because the rail and waterways is considered to be costly, ठीक है। तो अगर जितने पैसा आप खर्च करते हो रेल से ट्रांसपोर्ट करने में, राइट, उससे कम खर्च में आप ट्रैवल कर सकते हो रोड बाय रोड, ठीक है। तो फॉर दिस रीजन रोड ट्रांसपोर्ट इज कंसिडर्ड टू बी चीप एंड फॉर दिस रीजन देयर इज हाई वॉल्यूम ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो let us discuss about the significance. Why is rail important? Railways are important for India, ठीक है। So there are many significance of railways. The economic backbone, ठीक है। तो ब्रिटिश ने जब इंडिया में रेलवे इंट्रोड्यूस किया था, उसी टाइम से ही रेल का जो इम्पोर्टेंस है काफ़ी बड़ा है इंडिया में, ठीक है। तो रेलवेज, द मेन पर्पज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज वाज टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड सो दैट द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज कैन बी कलेक्टेड एंड द फिनिश्ड गुड्स कैन बी टेकन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो रेलवेज बेसिकली हेल्प्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया टू अचीव इट्स colonial supremacy, ठीक है, so that the final goods and services reaches to the Indian market, ठीक है। तो economic backbone, it works as economic backbone, ठीक है, and economic development में काफ़ी बड़ा रोल है Indian Railways का, and there is dedicated freight corridor, right? There are dedicated freight corridors which lowers the logistic cost, transport of goods and services, and the time of transportation from different parts of the country is higher, ठीक है। तो अगर आप रोड से ट्रांसपोर्ट करते हो,
right? And at the same time if you are traveling with the train, ठीक है, so train journey takes shorter time than the road journey, right? So for this reason there will be significant saving in time and also the cost, right? So for this reason the economic backbone, it works as economic backbone. And apart from that, driver for achieving the India's climate goal, ठीक है, तो इंडिया का जो क्लाइमेट गोल मैंने बताया कि जो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है एमिशन में, ठीक है, दैट इज हाइयर इन केस ऑफ रोड्स, ठीक है, तो एमिशन फ्रॉम रेलवेज इज लेस, राइट? सो फॉर दिस रीजन द इंडिया का जो टारगेट है 45% एमिशन रिड्यूस कर रहा, ठीक है, बाई 2030 फ्रॉम द 2005 लेवल, ठीक है, तो 2005 लेवल से 45% जो एमिशन रिडक्शन टारगेट है बाई 2030 उसको अचीव करना है इंडिया को, ठीक है. दैट इज कॉल्ड द नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, NDC, विच इज a part of the Paris Climate Agreement of 2015, ठीक है. तो पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट में पेरिस अकॉर्ड के तहत, राइट, देयर इज नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन which binds countries to reduce the emissions, right? तो इंडिया का टारगेट है 45%, उसको अचीव करने में ये रेलवेज हेल्प करता है, राइट? एंड अफोर्डेबल मोबिलिटी, वी टॉक्ड अबाउट इट, द मोबिलिटी इज अफोर्डेबल. रेलवेज में जितना खर्चा होता है रोड में उससे ज़्यादा खर्चा होगा, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रेलवेज रेवेन्यू, राइट, वर अप बाय 73%, राइट? तो although I discussed that the cost of transportation in road is high, ठीक है, but the road is taking time. तो if you economically compare the time and distance, ठीक है, time and the cost, then effectively the cost of revenue is less in railways, right? And the railways revenue earning were up by 73% in passenger segment during the April-January 2023, ठीक है. Although the revenue from the freight is declining, but the from the passenger is increasing, ठीक है. And the national security and integration इसमें भी important है, railways is important for national security. So you can give the example such as the Northeast Frontier Railway, ठीक है. So Northeast Frontier Railway connects different parts of Northeast India, right? तो ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे इज इंपॉर्टेंट फॉर मोबिलिटी ऑफ ट्रूप्स एंड ट्रांसपोर्टिंग द डिफेंस इक्विपमेंट्स, राइट? तो दिस इज एन अगेन इंपॉर्टेंट. एंड देर इज द एग्जाम्पल यू कैन गिव सच एज द बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट एक रेलवे रूट है. इट कनेक्ट्स द लद्दाख रीजन, ठीक है, वेयर देर इज चैलेंज ऑफ चाइनीज इनकर्सन इन दीज रीजन्स, right? So these are the significance, and there are other significance as well. Now let us discuss about them as well in detail, right? तो अर्बन लाइफलाइन, राइट, अर्बन एरियाज में भी रेलवे का काफ़ी बड़ा रोल है. रेलवे बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स आर रीशेपिंग द इंडिया सिटीज, ठीक है. दीज सिस्टम्स आर क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, राइट? तो रेलवेज आर कंसिडर्ड टू बी द मीन्स फॉर द मास ट्रांसपोर्ट, राइट? तो मास ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है रेलवेज. तो इफ यू सी द बसेस एंड टैक्सीज, राइट, how many people can you accommodate? You cannot accommodate a very large number of people, right? But in case of railways such as metro, you can accommodate the huge amount of people there, and they are eco-friendly as well. That means there will be less emission because there will be less amount of cars or taxis in the road. So for this reason the urban lifeline will improve, ठीक है, emission will improve, right? So for instance Delhi metro, you can take the example of Delhi metro, ठीक है. तो examples यहाँ पे क्यों important है? क्योंकि whenever you are writing the answer you have to give the examples, ठीक है. If you give the examples your chances of getting more marks in the UPSC improves, right? तो यहाँ पे जो daily news and editorial analysis है that is framed as per the UPSC pattern, ठीक है. UPSC में मेंस में आंसर आपको कैसे लिखना है, that is the editorial analysis has been framed in that way. And the Delhi metro carrying about 6.5 million passengers daily, ठीक है, has helped reduce carbon dioxide emissions annually, ठीक है. तो दिल्ली मेट्रो में इतना ज्यादा ट्रैफिक है, इंडिया का मोस्ट कंजेस्टेड रेलवे मेट्रो, ठीक है. तो वहां पे डेली में 6.5 मिलियन पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट होता है,
ठीक है, अगर यही जो पैसेंजर्स है, अगर यही पैसेंजर्स टैक्सी से ट्रैवल करना होता, देन द नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ टैक्सीज वुड हैव बीन रिक्वायर्ड इन द रोड. ठीक है, तो इसीलिए द मास ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिटी लाइफ. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द ब्रिजिंग अर्बन रूरल डिवाइड. ठीक है, रेलवेज एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर द बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. ठीक है, तो रेलवेज हैव रीच्ड द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, इवन द रिमोट, इन द रिमोट लोकेशंस रेलवे हैव रीच्ड, राइट. तो जैसे कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, राइट, इन द अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एटसेट्रा, रेलवेज हैव रीच्ड, राइट. एंड you can take the example of Jiribam Imphal railway line. ठीक है, so this is being constructed recently. So Jiribam Imphal railway line, where it is located, if you are asked in exam, then you have to know that this is located in Manipur, right. It connects the Assam and Manipur region. So this will connect the unrest area of Manipur. ठीक है, Manipur is considered to be an strategically important because there is a huge amount of incursions from Myanmar, right. So these remote locations can be connected, and apart from that, such projects not only improve the connectivity but also bring the development such as education, connectivity, healthcare, etc. ठीक है, तो लोकल का ट्रांसपोर्ट इजी होगा. सो दीज विल ब्रिंग अदर डेवलपमेंट्स एज वेल. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट there are many issues as well. We talked about the significance, but there are issues as well. So what are the issues? Let us discuss about them. The first one is declining share in freight transport. ठीक है, so freight का transport का जो freight का contribution है वो decline हो रहा है. We talked about it. ठीक है, 85% से 30% decrease हुआ है. That means more than 200% decline, right. And this is an important point. And apart from that, the financial performance and operating cost ratio. ठीक है, तो financial performance भी railway sector का काफ़ी low है, right. And if you see the financial health, right, if of the railways, then you will find that cost of operation. ठीक है, जैसे कि the maintenance cost, paying the salaries, pensions of the railway staffs, right, maintaining the stations, these costs are much higher than the revenue of the railway. ठीक है, तो the cost of the operation is more than 100%. That means there is high fiscal imbalance, right. There is decline in the financial performance of the railways. So this is an important point. The operation ratio has risen from 78.7% 2006-7 to 100% threshold in 2011-12. ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जो 2006-7 में रेवेन्यू ज़्यादा होता था, खर्चा कम होता था रेलवेज का. बट नाउ डेज व्हाट इज हैपनिंग इज जस्ट द अपोजिट इज हैपनिंग, राइट. तो नाउ डेज व्हाट इज हैपनिंग इज द ऑपरेशनल कॉस्ट is higher than the income of the railways. So that is impacting the efficiency of railways because revenue is less, right. And CAG का report है, तो whenever you are writing the answer you have to quote data, fact, example, everything. ठीक है, तो for this reason मैंने data, fact सभी यहाँ पर डाला है, examples, right. CAG का report है, for instance, Comptroller and Auditor General of India has flagged that the reported OR may not reflect the true financial performance. ठीक है, तो जो operational ratio है जो रिपोर्ट किया जाता है that is not actually true, right. If you include the pensions, everything, then the cost of operation of railways is much higher than the revenue. So that report was also provided by the Comptroller and Auditor General of India. ठीक है. Now there are other challenges, right, and the over reliance on coal for revenue, this is very important. ठीक है, तो जो इंडिया का फ्रेट ट्रांसपोर्ट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? कोल का है, राइट. द कंट्रीब्यूशन ऑफ कोल इज़ वेरी हाई, राइट. तो यहाँ पे इंडिया में अगर देखोगे द रेलवेज, द कोल ट्रांसपोर्ट, द रेवेन्यू फ्रॉम द कोल फ्रेट ट्रांसपोर्ट इज 47% ऑफ द फ्रेट अर्निंग. ठीक है, सो जितने भी रेलवे अर्न कर रहा है फ्रेट ट्रांसपोर्ट से, उसमें जो कंट्रीब्यूशन है 47%, which is around half the contribution total freight earning that is coming from the coal transport only. ठीक है, तो coal transport करने में इतना ज़्यादा खर्च revenue आ रहा है, right. The question is if the coal
ठीक है, if the Indian economy is trying to move away from coal based economy to the green economy, right? Indian economy is nowadays being focused on the renewable energy sectors. Indian government is trying to use less amount of coal, right, in the economy, so that the emission is less. But what is happening in this scenario is, if the usage of coal in the economy declines, then the transportation of the coal from the railways will also decline. That means the revenue of the railways will also decline. Okay, so that is the case, right? And the lack of diversification in freight revenue sources make Indian railways vulnerable to shift in energy policies. Okay, so energy policy का impact करेगा. And apart from that, the capacity constraints in the infrastructure. ठीक है, तो capacity भी काफी कम है railways का, right? And the pace with which the railways is expanding, ठीक है, although the railway routes is being expanded to the different frontiers, different territories of India, but the expansion is not at pace with the demand, ठीक है, the demand that is being created from India, right? If every sectors, every rural economy are nowadays being developed, ठीक है, तो रेलवे का कनेक्टिविटी सभी जगह अभी तक पहुंचा नहीं है. So for this reason the growth is still stagnant, ठीक है, इतना ज़्यादा improvement नहीं है. So growth is very slow, we can say. And apart from that, there is the technological adaptation lag, right? So the government of India, the Indian Railways ने कवच नाम का एक स्कीम स्टार्ट किया था, ठीक है, कवच rail कवच is very important. So this, under this rail कवच, the rails, the trains are being provided the sensors, automatic sensors, so that there is evasion of the collision, ठीक है. तो accident prevention tools such as the covers is being provided, right? So covers an automated train protection safety system, ठीक है. So this is an automation protected safety system for the railways, but this cover system has not been implemented in all the railways, right? Although government has taken this very noble initiative, but the implementation is a challenge, ठीक है. So technological lag is also there. So apart from that, there are many challenges, right? And the safety concerns, right? So recently we have seen that there is huge amount of accidents that is taking place in the railways. Recently we have seen that the Balasore triple train crash, राइट. सो उड़ीसा का जो बालासोर रीजन था, वहाँ पे एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, कई लोगों का जाने गया था वहाँ पे, ठीक है. मैनी हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड, right, due to the collision of the train. So such kind of incident happens, and if you have to present the data, right, तो जो इंडिया का जो रेलवे है, ठीक है, वहाँ पे 45 such accidents were taken in 2022-23, ठीक है. एक साल में, in the 1 year only, such a high number of accident is taking place in the railways. That means the safety is one of the major concern of the Indian Railways. And apart from that, the slow progress in the high speed rail projects, right? So high speed rail projects, the best example for this is the Mumbai Ahmedabad bullet train project, ठीक है. So bullet train project was proposed to be start from Mumbai to Gujarat in Ahmedabad, right? So that project has lagged, ठीक है. It has not been implemented till then. It has not been operational till today, ठीक है, due to various concerns such as the railway, because of various issues that arose in the implementation of projects. So it was originally aimed to be made operational by 2023, ठीक है. So 2023 तक इसको ऑपरेशनल बनाने का बात हो रहा था, लेकिन ये 2028 तक इसका जो डेडलाइन है एक्सटेंड किया गया है, ठीक है. सो डेडलाइन एक्सटेंशन से क्या होता है, देयर इज फर्दर इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है. सो कॉस्ट अगेन इंक्रीजेस इफ द डेडलाइन एक्सटेंड्स, ठीक है. इन्फ्लेशन होगा, राइट, ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ the making the project further increases, right? So due to this extension, the cost is again increasing, and the overall
project is lagging, right? So this is again the challenge, right? So Indian Railway का सारा काफ़ी सारा challenges, so these are the important challenge, and various committees recommended different reforms in the Indian Railways. For instance, the Vinod Rai committee was there. विनोद राय कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन 2015, ठीक है. कमेटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कौन कौन सी कमेटी किससे रिलेटेड है आपको प्रीलिम्स में पूछा जाता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू मेंशन द कमिटीज, द रिपोर्ट्स, रिकमेंडेशन इन योर यूपीएससी मेंस आंसर, देन इट गेट्स द एडिशनल एडवांटेज, राइट. सो विनोद राय कमेटी was a committee related to the railways, and this was formed in 2015, and it proposed to establish an independent railway safety authority. ठीक है. तो इंडिया में जो रेलवेज का में जो इंसिडेंट हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी बनाया जाए, ठीक है, विद स्टैच्यूटरी पावर्स, राइट. तो ये रिकमेंड किया था इसने. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, क्रिएट अ रेलवे एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड. तो जो एक्सीडेंट होता है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक सेपरेट अथॉरिटी बनाना पड़ेगा. दैट वाज अनदर रिकमेंडेशन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अ सेपरेट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी टू मैनेज द एसेट्स. जो एसेट्स है रेलवेज का उसको मैनेज करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनाना पड़ेगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इंट्रोड्यूस परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स फॉर द रेलवे एम्प्लॉयज, ठीक है. तो जैसा कि PLI स्कीम चल रहा है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है. तो सिमिलरली द परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन रेलवेज, राइट. तो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव मीन्स द employees of the railways will be given the incentives for their good performance. If they perform well, ठीक है, they will be incentivized, right? Such kind of incentives can be given. And apart from that, the Rakesh Mohan committee was there. It was formed in 2010, and this committee basically focused on revamping the accounting system to follow the Indian gap, ठीक है. तो एक अब जो अकाउंटिंग सिस्टम रेलवे से फॉलो किया जा रहा है उसको चेंज करना चाहिए. That was the recommendation. And apart from that, expand the into FMCG, IT, containerized cargo and automobile sectors, ठीक है. जो रेलवेज का भी जो रेवेन्यू है दैट इज कमिंग फ्रॉम द फ्रेट ओनली, राइट. तो अभी फास्ट मूविंग कमोडिटी, ठीक है, फास्ट मूविंग कमोडिटीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब सेक्टर में भी जो रेलवेज का है उसका वर्क है एक्सपांड करना चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रायोरिटाइज द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, स्पीड ग्रेड्स, अपग्रेड्स, ठीक है, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, ठीक है. तो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स को भी एक्सपांड करना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, द स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ रेल हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड. इफ यू सी कंपेयर द स्पीड ऑफ इंडियन रेलवेज विद द चाइनीज रेलवेज, देन दे विल फाइंड दैट द चाइनीज रेलवेज, the rail transport, the speed of Chinese rails are much higher than Indian railways, right. These things can be improved, right. And apart from that, enhance connectivity, right. So more infrastructure has to be created, and more the railway lines has to be created. So these are the important recommendations what we can do in the railways. Now next important topic for today is the important topic and trending topic, ठीक है, everyone talks about it. The topic is the significance of artificial intelligence in healthcare, ठीक है. So artificial intelligence is nowadays a important topic for the UPSC, because this artificial intelligence is said to be the future of India and the world, ठीक है. तो artificial intelligence is significant, as well as artificial intelligence is posing various challenges in the economy, ठीक है. So there are many challenges and the significance of AI as well. तो हेल्थ केयर सेक्टर में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, उसको हम एनालाइज करेंगे यहाँ पे. तो दिस न्यूज अपीयर्ड इन द हिंदू अगेन, राइट. एंड द इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम, राइट, इज फेसिंग वेरियस चैलेंजेस, right, such as the inadequate infrastructure, right, shortage of healthcare professionals, there is lack of professionals, there is uneven access to quality cares, right. तो इंडिया का जो डाइवर्स पॉपुलेशन है, some people are rich, some people are middle class, some people are lower class, and some people lives in rural areas, some people lives in urban areas. So these diverse classes of people के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, एक्सेस करना है, दैट इज डिफिकल्ट इन इंडिया. सो टू गेट अहेड विद दीज, टू गेट अहेड विद दीज challenges, the government of India
is focusing on implementing artificial intelligence in different sectors, ठीक है, so that the artificial intelligence can help in the healthcare sector, right? तो ये सब challenges है इंडिया के healthcare sector में, and artificial intelligence can provide different solutions to these, such as the effective diagnosis, right, the identification of diseases, right, in case there is efficiency, artificial intelligence are more effective, right, they can work more efficiently, in a faster way, right, and so for this reason artificial intelligence are important, and there has been a growing trend of use of artificial intelligence in different sectors, ठीक है. तो first significance is the diagnostics, ठीक है, in the diagnosis of diseases, right. For instance, the AI algorithms have been found to be effective in detecting the abnormalities in images that might escape the human eye, ठीक है, जो हम आंखों से देख नहीं पाते हैं उनको भी AI डिटेक्ट कर सकते हैं, right. So that is another one significant, and for this reason in the detection of very minute diseases which the eyes cannot detect, the AI can detect, ठीक है. तो for this reason diagnosis में important है, and there are various studies that you can quote. For instance, there was a study that was published in Nature Journal 2022, ठीक है, which said that there was reduction in the false positive and false negative detection, ठीक है, in the biopsy confirmed by the breast cancer. तो breast cancer detection में AI का accuracy काफ़ी ज़्यादा पाया गया, ठीक है. तो accuracy in the detection of the breast cancer was found to be much higher, right, as per the study published in Nature Journal. And apart from that, the treatment plans, right, तो AI is ushering in era of precision medicine, ठीक है. तो precision medicine में भी AI का काफ़ी बड़ा रोल है, right. What is the precision medicine? Precision medicine means the medicine which are targeted, ठीक है, to certain diseases, right. तो they can prevent the side effects, right. तो precision diagnosis में भी important है AI, ठीक है. AI can target the certain diseases effectively, right, and they can analyze the various patient data, ठीक है. तो पेशेंट का कुछ हिस्ट्रीज होता है, राइट. पेशेंट्स माइट बी सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस, तो वन डॉक्टर माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एनालाइज ऑल द डेटा ऑफ द पेशेंट, राइट. तो वो डेटा एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. जैसे कि अगर एक डॉक्टर कोई पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा है, ठीक है, उस टाइम में पेशेंट का पूरा हिस्ट्री का जानना ज़रूरत होता है उनको. he has to know everything, right, what drugs he has been taken, what drugs that he took in the past, what kind of treatment that he was going in the past. उनके बेसिस में वो डायग्नोसिस करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, राइट. तो वो सब डेटा कंपाइलेशन, डेटा एनालिसिस में AI का काफ़ी बड़ा रोल होगा, right. And apart from that, the genetic makeup, ठीक है. तो by considering the individual genetic makeup, lifestyle factors, medical history, AI can recommend the targeted therapies, ठीक है. तो जो पेशेंट का डेटा फैक्ट, ठीक है, पास्ट हिस्ट्रीज, वो सब कलेक्ट करके the AI will develop the targeted, what can be the possible treatment, ठीक है, that can be provided by AI. And the एग्जाम्पल दैट यू कैन टेक, ठीक है, IBM ने एक वॉटसन ऑन्कोलॉजी नाम का एक AI रिलेटेड, ठीक है, एक सेंटर्स बनाया, right, and it has been used over 230 hospitals worldwide and assisting oncologists in developing personalized cancer treatment, ठीक है. तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो एग्जाम में, right. IBM's वॉटसन ऑन्कोलॉजी, that means oncology is what? Oncology is the diagnosis or the treatment of cancer, ठीक है. So cancer related diagnosis को oncology कहते हैं, स्टडी को. And the IBM का जो Watson है, it is related to detection and diagnosis of cancer, right. तो IBM's Watson's oncology basically recommends what kind of treatment that has to be given to the people of the person who has been diagnosed with the cancer, ठीक है. तो and it has been implemented in 230 hospitals so far, ठीक है. एंड ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, राइट. सो ड्रग डिस्कवरी में भी इसका रोल है, राइट. एंड AI dramatically accelerating drug discovery and development process. In 2020, Insilico Medicine used AI to design, synthesize and validate a novel drug candidate for fibrosis, ठीक है. तो
ये भी एक एग्जाम्पल है, एक कंपनी है विच इज दी इन सिलिको मेडिसिन, ठीक है. इट यूज्ड द AI, it used the artificial intelligence to design, synthesize and validate the novel drug candidate, ठीक है. तो ये भी important है, right, and enhancing the clinical workflows, right. तो AI is streamlining the clinical workflows, reducing the administrative burdens and allowing the healthcare professional to focus more on patient care, ठीक है. तो वर्क फ्लोज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी डेटा कंपाइल कर रहा है, दैट इज इट इज यूजिंग एवरीथिंग. सो फॉर दिस रीजन द AI इज फाउंड टू बी इफेक्टिव, राइट. तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे कि एल्गोरिथम है AI का, राइट, इट कैन यूज एंड प्रोसेस द लैंग्वेज, सो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, राइट. तो AI का काफ़ी बड़ा रोल है हेल्थ केयर सेक्टर में. एंड रिमोट मॉनिटरिंग एंड टेलीमेडिसिन, दिस इज अनदर सेक्टर, राइट. तो डॉक्टर अगर करीब नहीं है, इफ डॉक्टर इज नॉट नियर, देन द डॉक्टर कैन डायग्नाइज एंड टेक केयर ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द डिस्टेंस, ठीक है. सो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड AI पावर्ड वेरिएबल्स एंड IoT डिवाइसेस, ठीक है. तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द एग्जाम्पल दैट यू कैन टेक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक सारा है, ठीक है. WHO सारा इज अ प्रोटोटाइप ऑफ डिजिटल हेल्थ प्रमोटर, ठीक है, अवेलेबल इन 24/7 इन 8 लैंग्वेजेस वाया वीडियो और टेक्स्ट, ठीक है. तो WHO का एक सारा नाम का एक प्रोटोटाइप है. It is based on artificial intelligence and this provides the healthcare related instructions, right, healthcare related idea, right, suggestions etc. to the patient, right. This is another important, and it can provide tips and due to distresses, eat right, quit tobacco, e-cigarettes etc. ठीक है. तो distress के टाइम में आपको हेल्प करता है ये, right. It can provide suggestions, how to quit cigarettes, how to quit the alcoholism etc. These kind of suggestions are given by the WHO SARA and you can quote these examples as well, ठीक है. And apart from that the education, जो medical education and training में भी AI का काफ़ी बड़ा रोल है, right. In medical education and the healthcare जो training है, in that area the virtual reality and augmented reality can be utilized to train the doctors, right, the manpower in real environment, ठीक है. तो augmented reality and virtual reality will provide them the real experience of everything, right. So they are the important for this reason. And apart from that there are many significance, right. So these are the important significance of artificial intelligence, but there are significant issues as well, राइट. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्थ केयर सेक्टर में, बट इसका काफ़ी बड़ा इश्यूज भी है, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज भी है. वी नीड टू नो अबाउट इट, राइट. एंड द इश्यूज आर द इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस, राइट. इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी कम है. फॉर इंस्टेंस इन रूरल एरियाज देयर इज लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट. इफ यू कैन कोट द डेटा, द 45% ऑफ द रूरल हेल्थ केयर एंड द वेलनेस सेंटर्स हैव इलेक्ट्रिसिटी बैकअप, ठीक है. तो देयर इज you'll find that रूरल जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप भी नहीं रहता है इन 45% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है. तो दैट इज द केस. एंड देयर इज इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे इंडिया का रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? दैट इज द चैलेंज. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द डेटा चैलेंज इज ऑल्सो देयर, लाइक तो लैक ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड अनक्लियर रिटेशन ऑफ गाइडलाइंस, ठीक है. फ्रैगमेंटेड हेल्थ केयर सिस्टम. तो हेल्थ केयर में जो डेटा है, that data is not compiled, right. The data is mostly in the paper form. तो इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड है दैट इज कमिंग इन द recent times only. We do not have the records of the past history, right. So data has not been compiled, there is no integration of data, and for this reason there is lack of data, which poses a challenge in artificial intelligence, ठीक है. Because artificial intelligence has been made to टेक डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा दैट हैज़ बीन फेड टू इट, ठीक है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो डेटा हम प्रोवाइड करते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो डिसीजन बनाते हैं, ठीक है. तो अगर डेटा इज नॉट इंटीग्रेटेड, इफ द डेटा इज लैकिंग, देन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल सफर, राइट. एंड डिजिटल डिवाइड इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, right. So what is the digital divide? Digital divide means
certain part of area or certain people will have the lack of the access to internet, access to mobile phones, digital technologies, etc. ठीक है. For instance, if you see the rural urban divide, rural areas में internet का penetration कम है, but in urban areas the penetration of internet is high. The number of mobile phone possession in rural areas is low, but in urban areas that is high, right? So disparity risks widening the healthcare gap between the urban and rural population. ठीक है. तो the rural regions lack the digital infrastructure. 45% of population lacks the access to internet. ठीक है. तो जो rural areas है, rural areas का 40% area में there is lack of internet. ठीक है. तो internet access is less in the rural areas. ठीक है. And regulatory hurdles are also there, right? So if you see India, there is lack of regulation in artificial intelligence. There is virtually near zero regulation for the artificial intelligence. There is no law that regulates the artificial intelligence. So that is the case, right? If the artificial intelligence becomes more regressive, it affects the people in negative way, then what will be the law, right? How that the law will be implemented in that case. So these are the challenges that the artificial intelligence poses, right? And apart from that, there are other challenges as well, ethical considerations, right? So ethical considerations are also there. Okay, so this is the most important aspect, I would say, right? So healthcare में जैसे कि the artificial intelligence do not have the ethical aspect like the human does. ठीक है. There is lack of compassion, there is lack of empathy in the artificial intelligence. For instance, there was a case in United States where the artificial intelligence face detection tool was not able to detect the African American people. ठीक है. So what we call the black people, right? तो color के base में discrimination हुआ वहाँ पे, right? Because that artificial intelligence technology was made on the data that was based on the white people only, right? So such kind of threat can poses the difficulties, right? Apart from that, cost and resource allocation is also there. ठीक है. तो cost का allocation is not there, right? तो high cost of AI development and implementation, right? तो जो AI development में जितना cost पड़ता है उतना healthcare में जो इंडिया में budget है that is very low. The budgetary spending of the government of India in healthcare is much less than the other countries. ठीक है. And apart from that, language and localized issues. ठीक है. तो there are many languages in India, right? तो as per the Grierson survey, ठीक है. तो Grierson का एक सर्वे हुआ था. So as per this Grierson's linguistic survey, there are more than 197 regional languages and more than 2000 regional dialects. ठीक है. So different types of dialects are there and official languages are only 22. So for these many languages, the artificial intelligence developing artificial intelligence would be difficult. ठीक है. तो language barrier is again there. Now let us see what are the guidelines. ठीक है. तो artificial intelligence हेल्थ केयर में तो आ रहा है, हेल्थ केयर is adopting the artificial intelligence nowadays, but what are the guidelines that are there in India? ठीक है. तो guidelines are basically given by the ICMR, right? Indian Council of Medical Research, and it played a very crucial role in the pandemic as well. ICMR is basically an important authority, the authority related to the drugs and healthcare sector in India. And in March 2023, the Indian Council of Medical Research released the ethical guidelines for application of AI in biomedical and research and healthcare. ठीक है. तो 2023 में इन्होंने एक जो गाइडलाइंस रिलीज किया, एंड 10 गाइडलाइंस क्या है? अकाउंटेबिलिटी एंड लायबिलिटी. ठीक है. तो हेल्थ केयर सेक्टर में अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए, राइट? एंड वहाँ पे रेगुलर ऑडिट्स, ठीक है, AI कैसे फंक्शन कर रहा है उसका ऑडिट होना चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोनॉमी. ठीक है. द ह्यूमन ओवरसाइट इज एसेंशियल, राइट? तो AI को इंडिपेंडेंटली नहीं छोड़ना चाहिए. AI शुड बी regulated by human. And data privacy, ठीक है, data has to be protected. And collaboration promotes interdisciplinary different collaboration between different organization and safety and risk minimization.
right? Safety and risk minimization is also there, and apart from that, accessibility, equity and inclusiveness. ठीक है, तो AI should be accessible to all the people in India, right? So that is the point here. So AI, if the AI is implemented, healthcare improves in India. That should not restrict the common people, the rural people, etc., to get the benefits from the AI. And apart from that, the data optimization, the addresses the bias and errors in data quality. ठीक है, so data should be optimized, and non-discrimination, right? We discussed about it. It should not be discriminatory, and the trustworthiness. AI must be valid, reliable, ethical, right? So artificial intelligence को ethical बनाना तो काफ़ी difficult है, but there is regulation that there is a guideline of ICMR that which says that the AI should be reliable, ethical and lawful, right? And apart from that, it should be transparent, right? So that is again important point, and these are the important policies. And the government of India का जो national health policy है, राइट, एंड दिशा है 2018 का, एंड मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017 है. ये भी जो कुछ आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी रिलेटेड, ऑल्दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन दीज एक्ट्स, बट द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, राइट, द डिफरेंट टाइप ऑफ evolving technologies that comes up are being controlled by, overseen by these acts. ठीक है, so these were the important current affairs that we discussed today, right? So these current affairs are all going to be important for your exam, right? So you need to know all these current affairs, right? We'll be coming up with other important current affairs in after few days. ठीक है, we'll be covering other important aspect, right? So these were all current affairs for today. We'll meet again in the next video, right? Till then, take care. Thank you.